एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट दे रखा है क्रोमेटोग्राफी। तो ये उसके साथ की कहानी है, एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल्स में दे रखी, तो थोड़ी सी बातों को डिस्कस भी करना होगा। सपोज हमने ग्लाइसिन और एलानिन दो एमिनो एसिड की बात करी, ग्लाइसिन और एलानिन, फॉर्मूले क्या है COOH और NH2, ये है ग्लाइसिन। और एलानिन में क्या है, इस वाली केस में हमने क्या करा, एक CH3 और ऐड कर दी, कहाँ पे, बीच वाले कार्बन पे, तो ये हो गया लेस पोलर और ये हो गई मोर पोलर। अब ये सॉल्युबल किसके अंदर है, ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और ये लेस पोलर के अंदर सॉल्युबल है या ऑर्गेनिक के अंदर, या ऑर्गेनिक के अंदर। ये इनकी शॉर्टकट, मतलब इनकी बैकग्राउंड है। अब एक्चुअली क्या है, ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसका एक एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। मतलब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या करते, दो टाइप के कह सकते, गैस इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो ये गैस यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे लिक्विड यूज़ कर रहे, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो करते क्या है भाई, तो यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच ही लगा रखा होते, ये इनकी टोटल सेटअप है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। एक थोड़े स्टेशनरी फेज है, मतलब एक इनर्ट सपोर्ट है, एक तरीके से एक इनर्ट सपोर्ट है, ठीक है। हमने यहाँ से मिक्सचर को इसके ऊपर डाली, अपने केस के लिए मान लो ग्लाइसिन और एलानिन, तो G+A कर दी। अब ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने यहाँ पे दो लिक्विड ले रखी है, एक लिक्विड जो नीचे की साइड पे है और दूसरी लिक्विड जो इस इनर्ट सिस्टम के इनर्ट सपोर्ट के ऊपर है। तो इसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, स्टेशनरी फेज है, और एक मोबाइल फेज है। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टेशनरी फेज, अगर हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज करी तो वहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं, कोई दूसरी पोलर मीडियम भी ले सकते हैं। लेकिन हमने जब उसके सब टाइप पढ़े, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, तो वहाँ पे एसेंशियली वाटर इज एक्टिंग एज ए स्टेशनरी फेज। तो फिर जो हार्ड सी सब्सटेंस है उसका क्या काम है, उसका काम है इनर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी है, उसे 2 बार पढ़ना। तो यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज ए स्टेशनरी, और ये जो सेलुलोज है या जिसके ऊपर हमने इसको टिका रखा है उसे इनर्ट सपोर्ट कहते हैं, वो स्टेशनरी फेज से अलग है। अब होगा क्या, इस पूरी कहानी के अंदर होना क्या है, जो ग्लाइसिन है वो इस स्टेशनरी फेज के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, और जो एलानिन है वो इस मोबाइल फेज के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। अपना पर्पस क्या था, दोनों को सेग्रीगेट करना। तो एक नीचे की साइड पे आके डिपॉजिट हो जानी है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, दूसरी जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जानी है। अपना पर्पस ही उसे सेग्रीगेट करना, तो होगी सेग्रीगेट। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब आते हैं इसने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके ऊपर। तो इसने स्टेटमेंट दे रखी है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज ए थिन फिल्म ऑफ लिक्विड। अभी डिस्कस करी थी कि थिन फिल्म होती है, वो सिर्फ एक इनर्ट सपोर्ट है। उसके अंदर एक हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बात करी तो वाटर ऑब्लिक पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस लिक्विड को क्लासीफाई नहीं करा, लेकिन फिर भी ठीक है, और यहाँ पे इनर्ट सपोर्ट वर्ड यूज करी है, तो ये बात तो सही है। अब कह रहे हैं इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज ए स्टेशनरी फेज, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इनर्ट सपोर्ट। यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है एसेंशियली उसने वाटर विल एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। अगर इस वाली साइड पे स्टेशनरी फेज की बात करें, यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन सी होनी है, इस वाली केस में स्टेशनरी फेज होनी है वाटर ऑब्लिक पोलर सॉल्वेंट। कोई भी पोलर सॉल्वेंट, इथेनॉल पकड़ सकते, वो भी हो सकते। तो ये बात सही है और ये बात गलत है, तो आंसर कौन सी है, सेकंड सही है। इसे आसानी से, मतलब एक लाइन में भी किसे कह सकते हैं, मगर उसे एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ना, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल लेने पड़े। बोथ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस फोर्थ प्रायोरिटी इज एट द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हाट आई नीड टू डू, I need to convert R into S and S into R, because one rule is there which is known as golden rule, and that golden rule says convert R to S and vice versa if fourth priority is at
horizontal line. So I will just reverse the direction, but before that I need to find which is going to be number 1 carbon. Acid is the functional group, so this is 1, 2, 3 and 4. So we need to discuss about 2 and 3, position number 2 and position number 3. So out of this 2, this is the oxygen which is going to have priority number 1. This is carbon, this is carbon. So we cannot decide. This is oxygen, this is chlorine. If oxygen and chlorine is there, it's a chlorine that is going to get the higher priority. And because chlorine is going to get the higher priority, so this is the 1, this is the 2, this is the 3. So 1, 2, 3, it is appearing clockwise. It is appearing clockwise. Because it is appearing clockwise, so it should be written as 2R. But what I told you, if fourth priority is at horizontal line, I need to convert this into S. So in place of 2R, it will be written as 2S. In place of 2R, this is going to be written as 2S. 2R is the incorrect statement, 2S is the correct statement. What's about the 3? What's about the 3? So for 3, once again, this is going to be number 1 without any if and but. This is number 1 without any if and but. This is carbon, this is carbon. We cannot decide. But this is hydrogen and this is the O. So this is going to be option, this is going to be 2 and this is going to be 3. So this is going from anti-clockwise. This is going to 1, 2, 3. This is anti-clockwise. So it should be written as 3S. But once again, hydrogen at the horizontal line. So this will be written as 3R. 3S is the wrong statement and 3R is the correct statement. It means 2S and 3R. Fourth is the right statement. Fourth is the right statement. You should be careful. You should be careful if the hydrogen is at horizontal point. It has to be converted into R to S and S to R. It's vice versa. And how to decide how to put the value, how to put number 1, 2, 3. So as far as these molecules are concerned, it's quite natural. You know what the atomic number is there, but when it comes to design number 2, there can be a confusion. You can write 2 this also, you can write 2 this also. But here if we write the 2 at this side, you are going to get a wrong statement because second atom is the oxygen, whereas in this case second atom is the chlorine. Chlorine is going to have the higher priority based on their atomic weight or atomic number. So fourth is the right answer. The incorrect statement among the following is or R. So start with the F and G. F and G are diastereoisomer. F and G. Suppose I put the mirror here. Then in place of OH, this should be the OH, but this is having CH3. So this cannot be. And second thing, suppose I put the mirror image. Suppose I put the mirror here. In that case, CH3. This is CH3. Okay. But in this case, suppose I keep it here. It should be CH3. But it is not CH3. It's a C2H5. So whether I put the mirror here or here, if I put the mirror in this plane or that plane, this is not going to create any type of the isomer. So this statement is correct statement, but my concern is to find incorrect statement. F and G are geometrical isomer. F and G are geometrical isomer. This is the double bond. This is OH and this is C2H5. This is OH and this is C2H5. So in one case they are on the same side of the double bond, whereas in second case they are on the opposite side of the double bond. It means they are geometrical isomer to each other. It's a cis and trans case. So it's a cis and trans case. So this is the right statement. Now this is the cis and trans. So this is the right statement. E, F and G are the tautomers. E, F and G are the tautomers. We know that tautomers means it's a hydrogen that is going to get exchanged from the double bond. Formula is same. Only thing is the double bond and the next part is the double OH and double bond. So hydrogen will come to this side and double bond will come to this side. Hydrogen will go to this side and double bond will come to this side. And based on this, we can say that they are the tautomer to each other. They are the tautomers to each other. As far as resonance is concerned, in the resonance, relative arrangement of atom cannot be changed. Relative arrangement of atoms cannot be changed. So this is the incorrect statement. So answer is option number 1. Answer is option number 1 because it's an incorrect statement.
So they have written a word hydride ion. Hydride ion. It means the negative charge present on the reagent. Hydride ions means they want to know the addition of negative ion to the carbocation. So hydride ion endorses the negative ion. It's a negative charge. So negative charge will attack to the most stable carbocation. Most stable carbocation. And which is going to be the most stable carbocation. This is the most stable carbocation, number 1. Next is the phenyl group, number 2. Next is option number 3, and 4th is the option number 1. So it's a basically CBDA. CBDA. Option 1 is the correct answer. Hyperconjugation is also known as no bond resonance, and this is formed by sigma and pi overlapping. But how it is? For hyperconjugation, you can understand, suppose it says CH3CH double bond CH2. Suppose for such compound, what I did, I changed this to the side. So this is appearing like C double bond C single bond CH2 negative. And in this case, this is the hydrogen, this is the hydrogen. They are bonded, but this hydrogen is not bonded. This is H positive only. This is H positive only. Now this carbon is sp2 hybridized, and this carbon is having a overlapping with H positive, which is having only one S that can form only one type of the bond, that is a sigma. So it's a sigma pi overlapping hydrogen. They cannot form pi bond. They cannot form pi bond. So the left out option is sp2 of this and pi of this. So it's a sigma and pi, S and sp2 overlapping. Basically it's a S and sp2 overlapping. So answer is option number 3. Answer is option number 3. In all such case, you should be careful that they can show the geometrical isomers also. And how it can be? So it's a C double bond C, and we are having 4 molecules. Let it be fluorine. This side it's a chlorine. Let it be randomly, you can put anything anywhere. Now what you need to be careful, keep this as a constant and keep rotating these elements. So if this can show, this will show one more isomer. In the second case, this is going to show the compound like this. This is going to be fixed. But this side you can make the rotation like this. So in this case, now iodine will be on this side and bromine on this side. In this case, the heaviest means this is the iodine and this is the chlorine. They were on the same side, that's why it's a Z configuration. In this case, they are opposite, that's why it's a E configuration. So this is a 2. In the next case, similarly, what you can do, keep the fluorine here, but the chlorine will not be here. Now this time it's a bromine. So you can put a chlorine and iodine, and of course you can make one more isomer. You can make one more isomer by rotating this part. Now the next time it's a C double bond C. This is the fluorine that is going to be fixed. We placed chlorine, bromine. Now this is the term for the iodine to come here, and this is the bromine, this is the chlorine. Once again, this is going to create an isomer by rotating this part. So it's 1, 2 and 3, 3 into 2, E and Z configuration. So total is 6. Total is 6 because they have not told that you need to find E only or Z only. They told to find the total isomers of the compound, and because it is having a double bond, so there is no question of any optical isomerism. Otherwise, you need to be careful about the optical isomerism because they have not told which type of the isomers they are talking. So answer is option number 4. Now this one is having the list of exceptions. At least 2 exceptions are there. So one effect is there that is known as ortho effect. So benzoic acid, irrespective of electron withdrawing group or electron donating group, if there is substitution at ortho position,
the acidity of benzene, the acidity of benzoic acid increases irrespective of whether it's electron donating group or electron withdrawing group, and mostly it is because the planarity has been changed or the planarity has been reduced, so there is no resonance, there is no conjugated resonance, or there is no conjugation in this structure. So basically the structure is getting disturbed, or we can say that they becomes two different type. They comes out from the plane, so overlap cannot be there. So how many ortho effects are there? This is the one. This is the one. Okay. But still exceptions are there. Why it is? Let's see. It appears that it is plus I effect. This is having minus I, or we can say minus R. Of course, minus I and minus R. This is also having, but because of the ortho effect, we gave a rebate to them. We came out from this plus R or minus R effect. Simply because of them, they will come out from the plane. So it is going to be the most acidic. In all options, we are having 5 is the most acidic. If I write the pKa value, it is 0.22. It is 0.22. For this, the value is going to be 4.19. I am writing this value just for the comparison. So we know that this is going to be much more acidic in comparison to nitro substitute. This is going to be much more acidic in comparison to this one. Now we need to manage this three remaining this. So what will happen? This will be less acidic, or this is going to be more acidic. The pKa value suggests that this is going to have 4.1, and the para substitute, although para substitute has not been written here, that is going to have 4.09. So this is for the ortho, this is for the meta, although ortho has not been written here. So when we compare 4.1 with 4.19, although both are very close to each other, but acidic character of this compound is going to be higher than this part. Out of this two, this is going to have 0.35 and this is going to have 0.34. Very close. But we know that what is going to happen, which is going to have the minimum value. It's option number 2, 4.19. Then next is 4.1. Next is the 4.1. Then next is 3. Then next is 4. And the maximum is for 5. So which is going to be the right answer? So the right answer is option number 4. You can be trapped here, but the value suggests, although it appears that it is going to show plus I effect, so acidity character should decrease, but the answer is the lone pair, this oxygen lone pair. Because of this experimental value is there, that this is slightly higher, more acidic than this one. So irrespective, or we can say that this is the exception. So आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. इनमें से किसी के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी लोकेंट सम रूल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो लोकेंट सम रूल की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से. अगर लोकेंट सम रूल की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा होना चाहिए, इस वाली जगह पे 1 लिखा होना चाहिए. तो ये गलत है. 4 नहीं लिख सकते, आपने 1 से स्टार्ट करना है. अब दूसरी वाली पार्ट के ऊपर आते. सपोज अगर हमने इसकी बात करी तो यहाँ पे इन्होंने मिथाइल को रखा है 6, और ये है अपना इथाइल, और ये भी है इथाइल. इस वाली केस में क्या लिखा भाई, 1 3 + 6, 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6. तो कितने आ गए भाई इसके आंसर हो गए 10. इसके आंसर हो गए 10. अगर हमें यहाँ पे इसे किसी और जगह पे अप्लाई करके देखें तो इस वाली जगह पे क्या आंसर आ सकते हैं भाई, जो दे रखा है 1 + 3 + 5, कितने आंसर है 9. एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 1 + 2 + 4 + 5. सो 1 + 2 + 4 + 5, ये कितने हो गए भाई, ये हो गए अपने कितने 9 10 12 हो गए. ये तो रूल्ड आउट है. अब इसे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं.
इस वाली केस में क्या है, यहाँ पे इन्होंने मिथाइल को नंबर 1 दे रखा है। जो रूल है, रूल के हिसाब से इथाइल को नंबर 1 देना चाहिए। अगर इन्होंने इसी चीज को यहाँ से स्टार्ट करा होता, सपोज इस वाली जगह से 1 2 3 4 5, तब भी नंबरिंग के अंदर कोई फर्क नहीं होता, तब भी नंबरिंग के अंदर कोई फर्क नहीं आनी थी। और उस वाली केस में इथाइल पहले आना था। अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है हम उससे वेरीफाई कर सकते थे, हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते थे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं करा। अब इस वाली केस में देखते हैं, इस वाली केस में इन्होंने नंबर 1 कैसे दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है इन्होंने इथाइल को, 3 दे रखा है मिथाइल को, और इसे दे रखा है प्रोपाइल। तो यहां पे इन्होंने कहां पे गलती कर दी, इस वाली केस में इन्होंने कहां पे गलती करी, तो इस वाली केस में जो 1 + 3 + 6 दे रखे है ना, यही बात गलत है। इसे अगर इन्होंने यहां से ऐसे स्टार्ट करा होता 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 आंसर आने थे, 1 + 2 + 4 आंसर आने थे। तो यहाँ पे भी नंबरिंग इन्होंने गलत करी है, ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब सारे ही गलत है तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है।